We'll start our session with prayer. Sit any meditative posture. Siddhasana, Padmasana, Sukhasana. Adapt Namaskar Mudra. Om Sankachadhyam Sambodadhyam Sambho Manasi Janata Devabhagam Yatha Purve Sanjanana Upasati Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Javadakina Yopakarotam Pravoram Muninam Patanjalina Prana Jalirana Tasmi Om Shanti Shanti Shanti. Grab your palms. When it's little palms, gently attach your eyeball and gently open your eye. Okay. First, today we are going to start our pranayama session. We'll start with Kapalbhati. Start Kapalbhati 60. Start now. After 60 steps, you must stop your practice. Now we'll go for abdominal breathing. In our hand, we need to add up this chin mudra. Then place it on your thigh. Slowly inhale and expand your abdomen. Exhale and squeeze. 5 times you'll practice. Just have a look. This is for me only. Just I'm putting my hand to understand it. Now all together, start your practice abdominal breathing in chin mudra. Slowly inhale and expand your abdomen. And slowly exhale and squeeze. Slowly inhale and expand your abdomen.
Slowly exhale and twist. Slowly inhale. Continue up to 5 rounds. Now, after 5 times, we'll go for Kapalbhati again. Go for Kapalbhati 60. After 66, stop the practice. Now in Chin Mudra, we'll make it Chinmay Mudra. Just close your 3 fingers. Place it on your thighs. Slowly inhale and expand your thoracic region or chest region. Slowly inhale and expand. And exhale and twist. All together. 5 times. Start your practice and continue your practice. Continue thoracic breathing 5 times. Deep inhale and deep exhale. Now, after thoracic breathing, we'll go for Kapalbhati again. 30 stroke Kapalbhati now. After 30 stroke, we'll go for this Adi Mudra. Just we need to in our thumb and close your fingers and place it just like this. And slowly inhale and we need to expand our clavicle region and slowly exhale. This will go for 5 times. Clavicular breathing.
slowly inhale and expand. Slowly exhale and release. Slowly inhale and expand. Slowly exhale. Continue 5 times. After completion of 5 rounds, just feel the changes in the body and mind. Slowly inhale and exhale. Now we'll go for Brahma Mudra. Just we need to place it in our lap. Now we are going to practice abdominal breathing, thoracic breathing, and clavicular breathing in single breath. Means full yogic breathing. So slowly inhale and expand your abdomen, then thoracic, and then clavicle. Then relax your clavicle region, thoracic, and abdomen. Continue this practice 5 times. Slowly inhale and expand your abdomen. After completion of 5 rounds, just close your eyes and be seated. Now again, we'll go for Kapalbhati 60 stroke. Go for Kapalbhati 60 stroke. Start now.
After completion of Kapalbhati, just be seated and prepare your mind for alternative Kapalbhati. How to practice? Just have a look, just like this. Just like Kapalbhati will exhale forcefully, but will exhale first from left, then right, just like this. Add up Nasika Mudra. This is Nasika Mudra, just like this. Okay, okay, all together. 30 strokes. Start now. After completion of alternative Kapalbhati, we'll go for Anulom Vilom practice. Add up Nasika Mudra. Inhale from both nostrils. Just exhale from left first, and deeply inhale from left. Exhale from right. Then inhale from right. And exhale from left. Continue 4 more rounds. Practice yourself.
After 5 rounds of Anulom Vilam, you may stop your practice and feel the changes in your body. If you are practicing, just enjoy your practice during inhalation and exhalation, how it's going inside and through your spinal cord, it's going up to your abdomen region, and from there it's coming out. Practice the pranayam with the feeling. Now prepare your mind for Surya pranayam. Just as Adab Nasika Mudra, inhale from both nostrils, exhale from right, then inhale from right, exhale from left. Again, inhale from right, and exhale from left. As if doing Vedana or doing the crossing the Surya Nari, that's why the name of this Abhyasa is called Surya Vedam. So all the time you need to inhale from right, exhale from left. So slowly go for it. Deep and long breath from right side and exhale from left side, deep and long. Count yourself. After 5 rounds of Surya Vedam, proper practice. Again, go for Kapalbhati, 30 strokes. Start Kapalbhati now.
After 30 strokes, set up your mind for Sitali Pranayama. We are going to practice Sitali. Just have a look. We need to hold our tongue and we need to make it roll with saliva. We need to absorb air and saliva, and then after swallow, we need to exhale from nostril, just like this. Okay. All together, we'll practice 5 times Sitali. If you are unable to practice Sitali, there is an alternative option, that is Sitkari, just like this. Means behind your teeth, we need to put our tongue, and then from there, we need to absorb air and saliva. One more time, just have a look. Okay. All together, 5 times Sitali, 5 times Sitkari. If you are unable to practice Sitali, then go for Sitkari 10 times. Okay. All together. After Sitali and Sitkari, just have a seat. Feel the changes in your body and mind.
Now we'll go for Bhastrika Pranayama. Bhastrika, we need to inhale our both. Inhale and raise your both hands up. And exhale and just completely out throughout your breath. So all together, we'll go for Bhastrika. 30 strokes. Start. Inhale, exhale. Continue. After completion of 40 steps, just observe your breathing and feel the changes in your body and mind. Now we are going to practice next Bandha. First we'll go for Jalandhar Bandha. In Antakumbha, inhale and hold your breath and lock the chin with sternum. Just like release. In Antakumbha, we need to lock this Jalandhar Bandha. All together. Inhale and lock. Release. Inhale and lock.
Release. One more time. Antikumbhak and Jalandhar Bandha. Release. In Bahya Kumbhak. Inhale completely. Exhale completely and then laugh. Come back. Again. Exhale completely and then laugh. Come back. Inhale completely and then laugh. Exhale completely and then laugh. Come back. Last round. Inhale. Exhale completely and then laugh. Come back. After completion of this challenge, Antikumbhak will go for in Keval Kumbhak or in normal breathing. Just lock the chin with your stomach knot and then stay. Slowly release your Hasta Mudra. Now we'll go for Dhyan Bandha. Just for that, release your leg. Then move it, move your legs because we are sitting for a long. And go for Bhadrasana. Hold it. Get start clapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Again, start clapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Release your leg forward. Okay. Now stand up.
We'll go for before Uddiyana Bandha. We'll go for this Agnisar Kriya. Just we need to exhale and stack our abdomen in. This is called Agnisar Kriya. That is preparatory phase for Uddiyana Bandha. Okay. Inhale completely. Exhale completely. And stack your abdomen in. And then up and down 20 times. Again, inhale completely. Exhale. Stack your abdomen in. And then up and down. Okay. After 20 strokes, now we'll go for Uddiyana Bandha. Just we need to stack our abdomen in and then hold. Inhale completely. Exhale. And stack your abdomen. Release. Again, inhale completely. Exhale completely. And stack your abdomen in. Last round. Inhale completely. Exhale. And stack your abdomen in. Slowly come back. And have a seat. We'll go for Mula Bandha. Sit in meditative posture. Siddhasana, Padmasana, Sukhasana, Bhadrasana, any meditative posture. Keep close your eyes. Now we'll go for in Antakumbha, in Mula Bandha. When in between anus and genitals, you make a quiz. Just in Antakumbha. Inhale and lock in between anus and genitals. Hold. Release. Again. Inhale and hold. Release. Last round. Inhale and hold. Release. Now we'll go for this abhyas in Bahya. Inhale, exhale, and then lock. Do the Mula Bandha, lock, and hold. Release. Again, inhale completely. Exhale completely.
and then laugh. Release. Exhale completely. And laugh. Slowly. Now in Keval Kumbhak, just lock here in between anus and genital and breathe normally. Uh, Keval Kumbhak means you do not need to inhale or exhale. It will go automatically in and out. Come back. Relax. You close your eye and be seated. Feel the changes and enjoy the blissful state of mind. Slowly inhale and feel how the air is going inside your body and it's spreading to every cell of the body. And it's purified. When you are exhaling, all the negative quality from the body is going out. Continue. Now rub your palms. Just gently attach your eyeball and sleep.
Before opening the eyes, we'll go for closing prayer. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, akashchit dukhavag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Grab your palms again. When it's little warm, gently attach your eyeball and face once again. Take your own time. With a big smiling face, gently open your eyes. Thank you. Thank you all. If anyone has any question, you may raise your hands up. Okay. Thank you all. Thank you. Okay. Okay. Sanuji. Yes. You can unmute. सर Yes. ये जो 2 आसन आपने गले का बताया, क्या नाम बोले आप इसका? ये आसन नहीं, ये बंधा है, जालंधर बंधा। जालंधर बंधा। ओके, तो इसका क्या बेनिफिट क्या है सर? ये बंधा जो कुंडली शक्ति का जागरण के लिए किया जाता है, या जो हमारा कोर एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए। इसमें विशुद्ध चक्र का जागरण होता है, वोकल कॉर्ड अच्छा होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। इवन सर्वाइकल, कोई अगर ये अभ्यास करते हैं तो उनका सर्वाइकल प्रॉब्लम भी नहीं होगा। लेकिन किसी का अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये अभ्यास नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जालंधर बंधा बोलते हैं ना? एकदम। जाल मतलब नेट, जालंधर, जाल का जो आधार है वही है जालंधर, मतलब नेट का आधार। जो हमारा गले हैं वहाँ पे 72,000 नाव या नारी जो भी बोलते हैं, वो उसका अवस्थान यहाँ पे ही है, गले में ही है। तो इसीलिए इनको जालंधर, जब इसको लॉक कर देते हैं देन इट बिकम जालंधर बंधा। जालंधर बंधा। ओके सर, थैंक यू सर। यस दिस सर मुद्रा का नाम बताइए फिर से, मेरे समझ में नहीं है। अच्छा, मुद्रा का नाम? मुद्रा है जैसे हाथ ऐसे रखते हैं, जैसे चिन्ह मुद्रा, ऐसे ऐसे। ठीक है सर, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे इंडेक्स और थंब एक साथ। ओके सर, यस। और ऐसे टुवर्ड द स्काई अगर रख दिए दैट इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा। इसको उल्टा कर दिए दैट इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। चिन्ह मुद्रा को मुट्ठी बंद कर दिए दैट इज कॉल्ड चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा, ओके सर। ठीक है, ओके। इसको जैसे थंब अंदर मुट्ठी बंद, और ऐसे ही इसको थाई पे रख दिए बीचों बीच में, दैट इज कॉल्ड आदि मुद्रा। आदि मुद्रा। ये लेफ्ट में रख दिए दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा। ठीक है सर। हाथ में जैसे ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं दैट इज कॉल्ड नासिका मुद्रा। यस दीप्ति जी। सर जो हम कुंभक करते हैं तो उसमें जब बंद लगाते हैं तो उसके बाद सांस नहीं लेना है ना? नहीं, अगर अंत कुंभक में है जैसे इनहेल एंड होल्ड बोल रहे हैं तो उसमें ब्रीथ को होल्ड करना है और उसमें सांस नहीं लेना। बाह्य कुंभक है मतलब एक्सेल एंड होल्ड, तो उसमें सांस को होल्ड करना, सांस और लेना छोड़ना नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सीता सी। सर वो कपालभाति के बाद जो एब्डोमिनल, थोरेसिक और स्कैपिकुलर ब्रीदिंग हुआ था, इन बिटवीन और एक बार भी कपालभाति किया था ना हम लोग, वो मैंडेटरी है क्या?
वो एब्डोमिनल के बीच और थोरासिक के बीच जो कपालभाति किया नहीं था? नहीं नहीं, ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ओके ओके। ठीक है, हम्म, कपालभाति का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? कपाल प्रदेश को साफ करना। हाँ और हम लोग ये रिपीटेडली कपालभाति अब इसलिए अभ्यास करते हैं हाँ so that हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। ओके। जैसे देखना कि 1 घंटा भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भी वी आर नॉट फीलिंग बोर्ड। ऐसा नहीं है कि अच्छा पैर तो थोड़ा जम जाता ही है, फ्रीज हो ही जाता है, बट नॉट लाइक दैट कि एकदम बैठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं ओके। है ना। हाँ 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 करेक्ट। तो देखना वो कुछ इजी लगता है, अच्छा अभी तो स्टार्ट किया है, ऐसा फीलिंग आता है। हाँ हाँ That's why we are introducing बीचों बीच में ये कपालभाति दे देते हैं so that Okay. शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से हो जाए। अच्छा। ठीक है, थैंक यू। ये सेशन अगर हम लोग 2 घंटा 4 घंटा भी करेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा if we introduce Okay. this method। ओके ओके। इसीलिए वो बीचों बीच में कपालभाति अभ्यास किया जाता है so that और शरीर भी वो मतलब क्या बोलते हैं फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है माइंड डल हो जाते हैं, ब्रीथ स्लो डाउन होते हैं। तो एट फर्स्ट ज्यादा स्ट्रोक करना है और धीरे धीरे वो कम करना है, राइट? एकदम, और नहीं ये जी। फैकल्टी के ऊपर निर्भर करते हैं। बाद में अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फैकल्टी देन यू कैन डू द 60 स्ट्रोक ऑल द टाइम, नो प्रॉब्लम, ओके 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 यू विल फील बेटर देन। ओके। यस संदीप। जो हम राइट से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? राइट से इनहेल और लेफ्ट एक्सहेल। सूर्य भेदम। सर उसका क्या बेनिफिट है? इट्स एनर्जाइज आवर इंटरनल बॉडी, और ये शरीर को अंदर से जैसे इट फील्स वार्म फ्रॉम आवर बॉडी, शास्त्र में लिखा हुआ है हठ योगा प्रदीपिका में। तो ये अगर अभ्यास करते हैं तो ये पैंडेमिक सिचुएशन के लिए अभ्यास कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये हमारा सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये शरीर में रोग मतलब इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं so that ठीक सर, we can be safe from this situation। ये है सूर्य भेदम, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। सूर्य का उद्देश्य क्या है? इस पृथ्वी में उजाला देना या इस पूरा संसार को। तो अगर सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होता है तो हमारा पूरा शरीर वो ऐसे एनलाइटेड रहेगा, गर्म रहेगा, सूर्य का जो प्रकाश या किरण। और सूर्य के किरण से क्या होता है, जितना भी जाम्स है वो मर जाते हैं, तो ऐसे शरीर के अंदर में भी कोई भी अगर जाम्स रहता है तो दैट विल किल। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।